Hello everyone, I am Rakhi Mishra, a company secretary. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss chapter 3 of CMA-DD, that is signing and certification. In this video, I will explain 4 important topics from signing and certification chapter. What is certification, what is pre-certification and importance of pre-certification, and the last is preparation before pre-certification. So, did you know under the Companies Act 2013, every company has to file different e-forms, some every year and some whenever an important event happen. To make these filings valid, they must be digitally signed by the company's authorized signatory. And here is where practicing professional like company secretary play a key role. The Ministry of Corporate Affairs trusts this professional to check compliance, verify document and certify that everything filed online is correct and reliable. The authorized signatory and the certifying professionals are responsible for ensuring that the content of the e-form and all its attachments are accurate, complete and properly scanned. Once a professional pre-certifies an e-form based on the company's records, the registrar of company accepts it. But remember, if a professional knowingly gives a false certificate or hide important information, they can be punished under the Companies Act, and it may also count as professional misconduct. So, e-form filing is not just a process, it is a responsibility, and professionals ensure that what goes to MCA is accurate, legal and trustworthy. So, एक बार रीड करते हैं नोट्स. Under the Companies Act 2013, companies must file various event-based and annual e-form, which must be digitally signed by authorized signatories. MCA also requires practicing professionals such as company secretaries to certify these e-forms to ensure compliances, accuracy and proper due diligence. Authorized signatories and certifying professionals are responsible for verifying the correctness of the information and ensuring that all attachments are complete, clear and compliant with the rules, regulation. Once an e-form is pre-certified based on company's record, the registrar records it. If a professional knowingly gives a false certificate or a hide material information, तो वो liable हो जाएंगे कंपनी के सेक्शन के आई गेस सेक्शन 448 है उसके हिसाब 447 एंड 448 के हिसाब से ऑल्सो ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी माना जाएगा. नाउ व्हाट इज प्री सर्टिफिकेशन? अकॉर्डिंग टू यहाँ पे दो डेफिनेशंस है. पहले तो एक मतलब कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हिसाब से बताई गई है और दूसरा अपने कंपनीज एक्ट वाली. अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, सर्टिफिकेशन मीन्स गेटिंग or giving an official document that proves something has happened or been completed. In simple words, certification is the authentication of a document by an independent professional. This makes the document more trustworthy and reliable. In India, certified documents are often required when companies file information with different regulators. Now, what is pre-certification? Pre-certification means that a professional like a company secretary in practice checks and confirms that document is correct before it is filed with the registrar. Under the Companies Act, company secretaries are officially recognized to pre-certify many e-forms submitted to the registrar of companies. Pre-certification was first introduced to avoid delays in company registrations.
Later it become a key method to ensure accuracy and correctness of document filed by the professionals. नोट्स रीड करते हैं. अकॉर्डिंग टू, ये मैंने बताया कैम्ब्रिज डिक्शनरी का. देन इट मीन्स ऑथेंटिकेशन, ये भी बताया इन सिंपल टर्म. नाउ प्री सर्टिफिकेशन रीड करते हैं. प्री सर्टिफिकेशन refers to the verification and confirmation of a document correctness by a professional such as CS, PCS before it is filed with the registrar. Okay. Now company secretaries are authorized to pre-certify e-form file with the ROC. Pre-certification was initially, जो बताया था, was introduced to reduce registration delays and later evolved as a mechanism to ensure accuracy of a document filed with the authority. Now, what is the importance of pre-certification? बेसिकली अगर सिंपल टर्म में बोला जाए तो सर्टिफिकेशन बिल्ड ट्रस्ट एंड प्री सर्टिफिकेशन इंश्योर दैट वॉट एवर गोज टू द रजिस्ट्रार इन इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड लीगली compliant. Now, what are the importance of pre-certification? So, first one is ensure correctness. A CS or PCS checks whether all details in the e-form are correct, complete and fully aligned with the company's books and records. If any information is missing or defective, the professionals advise the company to correct it before certification. Only after everything is accurate does pre-certification happen. So first one is ensure correctness. Read करता है, the professional verify that all the detail in the e-form are accurate and match with company's books and records. If any information is incomplete or defective, तो वो professional advice करता है कि भाई इस information को correct किया जाए. Now second, preemptive step. Pre-certification works like an early warning system. It ensures that whatever is filed is true, correct and match the company's records. This also helps the registrar rely on the professional certification and accept the document without further scrutiny. It reduces defective or incomplete filings. So, this is the preemptive check. Now, supports good governance. Accurate disclosure is backbone of good corporate governance. Shareholders and stakeholders depend on correct information in financial statement, board reports and annual returns. The Act has put strict duties on directors and CS and stronger penalties to ensure the accuracy of a corporate filing. Then the last is the second last is promote self-regulation. So pre-certification promotes self-regulation when an independent professional certifies an e-form, it reduces the need for heavy involvement from the ROC. The ROC can trust and take the pre-certified document on record immediately. Then the last is liability for false certification. If professional knowingly gives a false certification or hides important information, material information which is already defined, they can face punishment under the act and even be changed with be charged with professional misconduct under the Companies Act. Under the Company Secretaries Act 1980. ये रीड करते हैं. प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन, प्री सर्टिफिकेशन रिड्यूस डिपेंडेंट, ये मैंने बता दिया है. एंड द लाइबिलिटी का भी मैंने बता दिया. और CS एक्ट में तो है ही, इसके अलावा कंपनीज एक्ट में भी है. और इसको जो CS एक्ट में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को प्रॉपरली डिफाइन किया है उसके स्केड्यूल्स में. सो उस हिसाब से आपको पनिशमेंट मिल सकती है. So, pre-certification isn't just paperwork, it is a vital mechanism to ensure accuracy, trust, compliance and better corporate governance. Now, preparation before pre-certification. ये क्या होता है देखते हैं एक बार. Before a company secretary pre-certifies any e-form, there are some essential preparations. So,
फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द लॉ, पहले लॉ को समझो, है ना. द प्रोफेशनल मस्ट थॉरोली रीड द कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स कनेक्टेड टू द फॉर्म बीइंग सर्टिफाइड. ठीक है, जो भी आप फॉर्म सर्टिफाइड उससे रिलेटेड सर्टिफाई करो, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स है ना, वो रूल्स है या जो भी सेक्शंस है वो प्रॉपरली आप पढ़ो. ही शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विद द practical step and procedure normally followed in pre-certification. Then important preparations. ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी चीज है. फर्स्ट, ऑब्टेन अ प्रॉपर लेटर ऑफ एंगेजमेंट और अ बोर्ड रेजोल्यूशन फ्रॉम द कंपनी. भाई तुमको अपॉइंट करे, तुम कंपनी से बोर्ड रेजोल्यूशन लो या फिर अपॉइंटमेंट लेटर लो. सेकेंड, कीप अ फिजिकल और स्कैंड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट वेरीफाइड while maintaining confidentiality. ठीक है. Then make sure every attachment is clear, complete and easy to read. Then verify all details directly from the original records. ऐसा नहीं कि हाँ मैंने किसी ने उसकी कॉपी या मैंने किसी थर्ड पर्सन से ऐसे उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया. नहीं, कंपनी के रिकॉर्ड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उससे डायरेक्टली वेरीफाई करो. इंश्योर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट एंड देयर आर नो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज. Then confirm that the form is signed by the company's authorized signatory. ऐसा नहीं authorized signatory कोई और sign कोई और कर रहा है. And lastly, understand the relevant provision, process and approvals required under the act before certifying. Then maintaining records to ensure quality in attestation work. Every PCS must maintain a register of all certification and attestation. This register should be available for inspection by authorized person. Then the last is signing and certification rules. As per Company Secretaries Act 1980, if a PCS allows anyone who is not qualified member or not his partner to sign certification on his behalf, it is treated as professional misconduct. एक बार रीड करते हैं नोट से. प्रिपरेशन बिफोर प्री सर्टिफिकेशन. प्रोफेशनल इन प्रैक्टिस बिफोर अंडरटेकिंग द वर्क रिलेटिंग टू प्री सर्टिफिकेशन शुड थॉरोली रीड द रिक्वायरमेंट, जो भी प्रोविजंस है उसकी एंड रूल्स की. फेमिलराइज हिमसेल्फ विद द एक्चुअल, और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए. देन फर्दर उसके अलावा वो कौन कौन सी चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए. तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन बता दिया मैंने. देन फिजिकल स्कैंड कॉपी उसको जो कंपनी के पास जो ओरिजिनल डेटा होगा, रिकॉर्ड्स होगा, उससे सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा. देन इंश्योर ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट्स आर एलिजिबल विजिबल बता दिया मैंने. देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, ठीक है, डन. देन अच्छा ये बोला है कि फिजिकल एंड जो भी जैसे डेटा चेक कर रहा है ना जो भी, तो उसको वो प्रॉपरली मेंटेन करेगा. ठीक है. एंड सब्जेक्ट टू द कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट, मतलब किसी किसी कंपनी का होता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं जो कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल, वो शेयर नहीं कर सकता, तो वो उस हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा. देन करेक्टनेस चेक करेगा, करेक्टनेस. देन द फॉर्म इज साइंड बाय ऑथोराइज पर्सन, है कि नहीं वो देखेगा. देन बिफोर सर्टिफिकेशन उसको उस प्रोविजन के बारे में पता होना चाहिए. देन ये बता दिया मैंने. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स कि उसका क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन वर्क, एवरी पीसीएस मस्ट मेंटेन रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन, ये चीज़ें. एंड द लास्ट इज साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन रूल. ये एज पर क्लॉज 11 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट, पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर, ये मैंने अभी बताया ना, जो मेंबर नहीं होगा या जो पार्टनर नहीं है उस पीसीएस का, अगर वो उसको अपने बिहाफ में साइन करने के लिए, सर्टिफाइड करने के लिए देता है, देन ये भी इसे भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ही माना जाएगा. So these are the essential steps a professional must follow before pre-certify any form. Proper preparation ensures accuracy, compliance, and professional responsibility. So signing and certification is not just a procedural requirement; it is a key responsibility of CS. Proper verification and ethical practices ensure accurate filing, compliance, and good corporate governance.
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे का हम नेक्स्ट इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like, share and subscribe to my channel for more corporate law insights. Thank you so much for watching.